Hello guys, welcome back. So in my last vlog, you guys must have watched that we have reached Zante, that is Zakynthos in Greece. But after that we were so exhausted. What we did after that was we went to collect our rental car, but unfortunately we couldn't because क्रेडिट कार्ड नहीं था हमारे पास, इसीलिए अपने वहाँ से गाड़ी तो नहीं पिक कर पाए एंड वी आर लुकिंग फॉर सम लोकल रेंटल कार हियर जो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करे. एंड नाउ वी आर एट आवर प्लेस कॉल्ड पलामोस, राइट? सो वी आर एट पलामोस. हमने एक 1 डे के लिए एक रूम रेंट किया है. स्वीट है बेसिकली वो. एंड वी आर सो हंग्री कि हम सीधा खाना खाने आ गए. सो सांगरिया आ चुकी है एंड हम एक ब्यूटीफुल से ओपन कैफ़े में बैठे हुए हैं. एंड वी हैव ऑर्डर्ड द ग्रीक स्पेशलिटी विच इज़ कॉल्ड जायरो. सो I'll try and I'll show you how gyro looks like. And okay, after here we don't know where we are heading towards, so I'll keep you updated. Keep watching my channel and love you. Bye. We got fried calamaris and the Zara man is eating food. Zonpe. Chicken gyros and mixed gyros. Bon appetit. और हीरो, क्या हाल चाल है तुम्हारे? जानते में सो रहे हो तुम? बहुत नींद आ रहा है? मैं ऐसे लैजी लोगों को लैजी आना नहीं चाहिए यहाँ पे. सोना चाहिए अपने घर पे. बाय द वे, हम बाय द रोड एक काटे डोर पार्लर में आए जहाँ पर अर्पित ने पी है कॉफ़ी और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम. एंड थोड़ी बारिश हो रही है. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्लाउड टू गो अवे एंड देन वी आर प्लानिंग टू गो टू द बीच. और हमने अपने रूम के लिए पानी की बॉटल्स ले लिए क्योंकि यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, राइट? वी can't drink this water, so we have bought these water bottles. And okay, I'll see you at the beach now. I'm all the beach ready. मज़ा आ रहा है मुझे तो. अर्पित सो रहा है और मैं एकदम एक्टिव हूँ, जबकि मैं 3:30 उठी थी. अर्पित 4 o'clock उठा था, बट स्टिल आई एम. बारिश नहीं हो रही है, अभी चलो. ओके, लेट्स गो. See you guys. ये है हमारा Day 1 होटल और ये है मेरा स्मार्टी हबी. मेरे को भी दे किसी. और ये हमारे रूम्स है जिसमें अर्पित अभी भी घुसा. एंड यू कैन सी यहाँ से एकदम वॉकिंग बीच है. काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, एज यू कैन सी. मेरे को इंडोर से यहाँ के अंदर के लुक से ज़्यादा दिस इज़ लाइक अ स्वीट. इट हैज़ एन ओन किचन, वॉशरूम, what do you call it, room, and bag में मेरे, and a balcony, okay, wherein you can sit. सामने रेस्टोरेंट है इनका और उसके पीछे आपको दिख रहा होगा पूल है. ओके, सो दिस प्लेस इज़ इन पलामोस और ये हमने सिर्फ Day 1 के लिए लिया. दैट इज़ हम कल सुबह यहाँ से चेकआउट कर देंगे. And we are going to stay in another place which is really good. Okay, this is not good, this is just like cheap option to stay for a night. Okay,
what I liked about this place is, I'll show you. I hope you can see these birds. They are preparing a nest. कितनी प्यारी है यार, कितनी क्यूट. और नीचे ना बहुत सारे अनार के पेड़ हैं, तो उसमें अनार निकले हुए हैं. That's not something which I like about this place. What I like about this place is the location. It's located centrally and यहाँ से सारे market, beach is like 5 minutes walk. और बहुत cheap है यार. अगर किसी को बहुत ही cheap सा कुछ चाहिए for a night, I would recommend this place. But हमने बहुत अच्छी जगह बुक करी है, so this is not at all our favorite. Not at all. Just like a time pass. Okay. And अर्पित मेरा लुक दिखा दो और एक बार आके यहाँ. Come on, quickly. से कैमरा उल्टा मतलब just hold it and show it to me. Okay, ऐसे मत करना, ऐसे vlog नहीं आता. What are you doing? Better. बस. So बकवास किया तुमने. Okay, now we are going to the beach. Bye. गए थे सिल्वी. Tsilivi, okay. So we have reached the Tsilivi Beach. Looks nice. Let's go. कहाँ है ये? हमारे घर से like literally 3 minutes walk. Yeah, 3 minutes walk from our room. This Tsilivi Beach. It's so amazing, guys. You can see my background. Wow. इस पानी की वेव वाली आवाज़ को सुनने के लिए तरस देखी है. And now I'm here finally. It's not one of the best beaches in Zakynthos, to be honest, but it's very like 3 minutes, and why not? वैसे भी आज का हमारा कोई एजेंडा नहीं है. We wanna spend some time here and then we'll go to the Zakynthos market. Zakynthos. Wow. Rainbow. Oh, rainbow. Oh, yes. Wow. कितना प्यारा है. जब फ्लाइट में भी थी ना तब भी मुझे दिखा था रेनबो, बट वो कैप्चर नहीं हो पाया था. Beautiful. It's been raining and sunny, so rainbow is obvious. Okay guys, अब मैं थोड़ा सा चिल करना चाहूँगी. लिटरली आई वांट टू रिलैक्स. Sunbed, yeah, you can sit here. Oh, okay. Okay. So guys, I'll see you in a while. I'm gonna
really relax now, enjoy the beach and ta-da! यार ये जगह एकदम सही है ना? हर चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री है, like chips, cake, and you just order the drinks, whatever, cocktails, and full day के लिए shack मिल जाता है आपको with this view, which is not bad, actually it's amazing. मैं पता नहीं कितनी देर, 1-1.5 घंटा तो मैंने पानी में स्पेंड किया, चुपचाप आराम से मैं इंजॉय कर रही थी, लाइफ की कोई टेंशन नहीं. आई होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पॉजिटिविटी मिले एंड वो भी जल्दी कहीं घूमने जाएं, और अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो वर्चुअली मेरे साथ घूम लें. आई थिंक इतने टाइम बाद इतना मज़ा आया. Just listen to this meditation sound. Wow. Water is very clear, guys. Very clear. And इतना अच्छा फील हो रहा है ना, बस I can't explain this feeling. Very calm. Very serene. I'm gonna sign off for today with this beautiful view. I'm not sure if in the evening I will go somewhere out and if I will shoot the video or not. But if not, then I'll see you in my next video. Till then, take care, love you, bye bye. And agar kuch interesting kiya, definitely I will vlog and I will post. Okay? Take care, guys.